Hello students, we have completed our chapter, that is acid, base and salt. Okay, now we are going to do the summary of this chapter, in which we are going to study about the some another points which we have not done in the chapter, or you can say which are related with the that topics which we have done already. Okay, सो द नेम ऑफ चैप्टर इज एसिड बेस एंड सॉल्ट. सब हमें पता है कि इसका चैप्टर का नेम क्या था, एसिड बेस और सॉल्ट है. सो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द एसिड्स. यू ऑल नो अबाउट द एसिड. व्हाट आर द एसिड्स we have done the substance, all the substance in the nature are categorized in the three ways. Okay, first acid, base and salt. You can say salts, or you can say the न्यूट्रल सब्सटेंस. जितने भी सब्सटेंस हैं उनको थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस आते हैं. न्यूट्रल में हमारे सोल्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एसिड्स हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं किसके बेस पे, उनके सोर्स के बेस पे, फ्रॉम वेयर वी गेट देम. ओके, we have done already that they are the organic and natural substance, and another one the mineral, artificial, or you can say the inorganic substance. Okay, inorganic substance or natural means which we get from the plants and animals. The examples which we have done, the lactic acid which is found in the milk, or you can say the curd, and citric acid which is found in the lemon and citrus fruit. Okay, malic acid found in the apple. So these are the some example which we get from the plants and animal, or you can say from the nature. So they are known as the organic acids. Now we are talking about the mineral acid. Okay, mineral or artificial you can say, or inorganic you can say. All three are the given to the name to same acid. Okay, acid prepared synthetically in the lab. वो एसिड्स जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं आर्टिफिशियली, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल या मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं. एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, इनके बारे में भी हमने रीड किया था लिटिल बिट. गॉट इट. नाउ सी द एसिड्स क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी एसिड को टू कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स. ओके, स्टूडेंट्स, इन द स्ट्रॉन्ग एसिड वी कैन से द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर corrosive in nature and they cause burn on skin. ये कैसे होते हैं नेचर के, कोरोसिव होते हैं, मीन्स वो अपनी बॉडी पे इफ़ेक्ट छोड़ेंगे, उस इरिटेशन होगा, उसको जलाएंगे, ख़राब कर देते हैं स्किन को. ये कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, एंड द वीक एसिड विच आर माइल्ड इन नेचर. माइल्ड मतलब वीक. दे शो द लिटिल बिट इफेक्ट ऑन आर बॉडी, और यू कैन से डू नॉट कोरोड आर, डू नॉट बर्न आर बॉडी, डोंट कॉज बर्न ऑन द स्किन. जो हमारी स्किन पे कोई बर्निंग इफेक्ट शो नहीं करते हैं. एक कार्बनिक एसिड हो वीक एसिड में आता है, तो इतना ज़्यादा कोरोसिव नहीं होता है. एसिटिक एसिड जो मिनरल जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनको हम वीक एसिड में कंसिडर करते हैं. गॉट इट. सो वी कैन गेट दैम थ्रू द फूड ऑल्सो. ओके, now the acids on the basis of their strength, they are two types, concentrated and dilute. Concentrated means the pure form of acid in which they have minimum amount of water, जिसमें water ना के बराबर होता है, या minimum amount of water होती है, उसको बोलते हैं concentrated. And concentrated are the more corrosive than the others. Okay, other one is a dilute, means which have the maximum amount of water inside it. जिसमें वाटर की अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है, तो वो डाइल्यूट फॉर्म कहलाता है उसका. एंड डाइल्यूट डज नॉट कोरोड सो मच लाइक द कंसनट्रेट एसिड. गॉट इट. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. ओके, इन द प्रॉपर्टीज वी नो दैट एसिड आर शार इन टेस्ट. ये टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं. दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं
किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, जब वाटर में डिजोल्व होते हैं. And one another important thing is that in the dried form they do not conduct electricity, because we all know that any substance can conduct electricity when they have the free ions. Okay, so in the form of aqueous solution they conduct the electricity. They are corrosive in nature. Okay, they are corrosive in nature, and more corrosive are mineral acids are corrosive in nature. Can be stored in plastic and glass container. इनको प्लास्टिक या ग्लास कंटेनर में ही स्टोर करते हैं. मेटेलिक कंटेनर्स में हम इनको स्टोर नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि when they are stored in metals they react with metallic substance and they change their property and they can destroy them. वो उनको destroy भी कर सकते हैं और मेटल के साथ में वो रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप के सोल्ट बना सकते हैं. सो दे आर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस लाइक प्लास्टिक एंड ग्लास कंटेनर. दे आर यूज टू स्टोर द एसिड्स. ओके ओके, नाउ we are going to talk about the base. Okay, base also have the two type of strength, strong base and weak base. And the strong base, potassium hydroxide and sodium hydroxide, these two are the example of the strong base. ये दोनों ही strong base के examples होते हैं. ठीक है. Another then these two, the magnesium hydroxide, ammonium hydroxide, another one calcium sometimes are taken in this category. They are known as the weak base. Okay, now properties of base. Base are bitter in taste. जब उनको टेस्ट करते हैं वो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं. They are slippery to touch and like the acids they also conduct the electricity. Few base are soluble in water. From the bases, few base are soluble in water, so that they are known as to alkalis. जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं पूरी तरह से उनको हम कहते हैं एल्कलीज. एंड अनदर वन आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर. इसके अलावा सोल्यूबल नहीं होते हैं या कुछ सोल्यूबल नहीं भी होते हैं. वो सारे कॉमन बेस कहलाते हैं. Got it? Now we have studied about the indicators also. You know the indicators which change their color in acid and base. Okay, हमने नेचुरल इंडिकेटर्स की बात कर ली थी, वो हमने रिसेंटली पढ़ा था. उसके बाद हमने फिनोफ्थलीन को रीड किया था. वन अनदर एसिड another indicator I am going to tell you, that is the methyl orange. Actually it is not given in your syllabus, but I am going to tell you just for the knowledge. Okay, methyl orange gives red color in the acid, and methyl orange itself is orange in color. Okay, when we put some drop of methyl orange in the acid, it changes its color into red, and if it dissolve in the base it gives a yellow color. Got it? So this is about the acid and base. Okay, now I am going to provide the exercise of this chapter. Thank you. In next video beta.